Hello and welcome to EP classes. I am Dr. Mir. This is lecture 4 on chapter 2, biological classification. And we were discussing bacteria that are included in kingdom MONERA. Today we will be talking of different modes of nutrition in bacteria. So sit back and enjoy the video. Okay, so nutrition in bacteria. So bacteria can show both autotrophic as well as heterotrophic nutrition. Let's talk of autotrophic nutrition in bacteria first. Now, as you may know, autotrophic matlab they can manufacture their own food, or you say they can manufacture organic materials from inorganic raw materials with the help of energy obtained from outside source. Now, on the basis of this outside source of energy, दो टाइप्स हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के. ये आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सनलाइट है then it is photosynthesis. Although bacteria can obtain some energy from infrared rays also. But for now, let's keep it simple and consider light rays only. Okay. And chemosynthesis. So chemosynthesis is when energy is obtained from some exergonic chemical reactions. And you may know एक्सोगोनिक रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है. एंड दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ inorganic substances that are present in the external medium, and we will see in a while how. The bacteria that perform photosynthesis are called photoautotrophs, and bacteria performing chemosynthesis are called chemoautotrophs. Simple. Let's talk a little of photoautotrophic bacteria first, and we will see also what their photosynthesis looks like. So photoautotrophic bacteria में photosynthetic pigments हैं bacteriochlorophylls and bacteriophytins. प्लांट्स में आपको पता होगी photosynthetic pigment है chlorophyll, लेकिन यहाँ बैक्टीरियोक्लोरोफिल. इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आप क्लोरोफिल से मैग्नीशियम आयन निकाल दो, वो फियोफाइटिन है. इसी तरह बैक्टीरियोक्लोरोफिल से मैग्नीशियम आयन निकाल दो, वो बैक्टीरियोफियोफाइटिन है. ओके, ये हो गई बात फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन बैक्टीरिया की. नाउ बैक्टीरिया बीइंग प्रोकैरियोटिक has no membrane-bound organelles. But in photosynthetic bacteria, we find membrane-bound compartments called thylakoids. They are basically the cutout invaginations of plasma membrane. ये plasma membrane, ये इसकी invagination, and sometimes it cuts out and forms thylakoids. और इन thylakoid membranes या plasma membrane में ही होते हैं photosynthetic pigments, reaction centers और electron transport chain के components. We will get to know all of them in a while. Let's talk a little of bacterial photosynthesis. अब photosynthesis यूकेरियोट्स में हो, मतलब प्लांट्स में हो या इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, जहाँ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी टू मेक शुगर, विच वी ऑल्सो कॉल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर आपको थोड़ा आइडिया हो रिडॉक्स रिएक्शंस का, तो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन कहते हैं, जो यहाँ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की. अब प्लांट्स में क्या होता है, इस हाइड्रोजन का सोर्स वाटर होता है. इस हाइड्रोजन का सोर्स वाटर होता है, एंड व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन अवे फ्रॉम वाटर,
oxygen is liberated. This liberation of oxygen, इसकी वजह से we say plants में oxygenic photosynthesis होती है. But in photoautotrophic bacteria, there is no liberation of oxygen, or you say bacterial photosynthesis is anoxygenic. Because the source of hydrogen is not water. Instead, it can be other compounds. For example, in green sulfur bacteria, source of hydrogen is hydrogen sulfide, H2S. This sulfur, which is liberated and not oxygen. The sulfur, it forms bubbles on the outside of bacteria, hence the name green sulfur bacteria. Now, photosynthesis, फिर वो plants में हो या in bacteria में, एक light reaction part होता है और एक dark reaction part. Light reaction part में light energy को harvest करेंगे, absorb करेंगे और बनाएंगे ATPs. मतलब light energy, which is in the form of photons, इस light energy को convert करेंगे into chemical energy, which is in the form of ATPs. And the process is called photophosphorylation. Light reaction part में और बनता है हमारा reducing power called NADPH or NADH. और यही NADPH reduce करेगा dark reaction part में carbon dioxide को, which we were discussing earlier, and which we also call fixation of carbon dioxide, to synthesize sugar with the help of ATPs that we saw are also formed in light reaction part. तो photosynthesis in a nutshell ये है कि light reaction part में ATPs और NADPH बनेंगे और dark reaction part of photosynthesis में sugar. Now, NEET students pay attention. Let's take the example of green sulfur bacteria to understand all this in a little detail. तो इस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में एक तो रिएक्शन सेंटर P840 है जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल A होता है. And we call this reaction center P840 because it absorbs maximum light of wavelength 840 nanometer. इस रिएक्शन सेंटर के आसपास और भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरी वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करते हैं टू दिस रिएक्शन सेंटर, एंड वी कॉल दिस प्रोसेस हार्वेस्टिंग. इस रिएक्शन सेंटर के साथ मेम्ब्रेन में आप पाओगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. This electron transport chain consists of a series of electron carriers that sequentially transfer electrons. अब इस फिगर में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के रिएक्शन सेंटर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दूसरे कंपोनेंट्स को हमने ड्रॉ किया है according to their reduction potential. And remember, ये सब membrane में है. यहाँ reduction potential 0, and as we go down, reduction potential increases. Now, reduction is acceptance of electrons. And if reduction potential is high, that means a good electron acceptor, or you say a poor electron donor.
और यहाँ हम देख सकते हैं अगर हम 0 से ऊपर जाएं तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, और सबसे ऊपर यहाँ पे reduction potential is minimum. Reduction potential minimum, you say poor electron acceptor or a good electron donor. Okay, and likewise, based on their positioning on this reduction potential scale, electron transport chain में इसका reduction potential ज़्यादा है इससे, मतलब ये अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, मतलब ये इससे भी अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एंड सो ऑन. नाउ लाइट रिएक्शन पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी से ये रिएक्शन सेंटर P840 एक्साइट हो जाता है, and here as you can see, from being a poor electron donor it becomes a good electron donor, इस गेन ऑफ लाइट एनर्जी की वजह से. अब ये जैसे एक्साइट हुआ था एग्जैक्ट उसी पाथ से डी एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि उस केस में it will lose a lot of this gained energy as a heat energy, which is not good. It wants to make the most of this gained energy. So its de-excitation occurs in steps. And for this stepwise loss of energy, membrane में ये electron transport chain है. You don't have to remember the components of this electron transport chain by name. You just have to get the idea. Okay. अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है from one to the other component of this electron transport chain, electron is losing some energy, और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन पंप्स हैं. These proton pumps use this energy and transfer protons to the other side of membrane. And these proton pumps using this energy work against gradient, कि अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन अब इस साइड ज़्यादा है, ये प्रोटॉन पम्प्स will still pump the protons in the same direction irrespective of the gradient using this energy जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है by going from one component of this electron transport chain to the other. अब मेम्ब्रेन में एक कैरियर प्रोटीन है जो एक एंजाइम भी है and is called ATP synthase or simply ATPase. अब क्योंकि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा अंदर कम है तो एक केमिकल ग्रेडियंट है, और प्रोटॉन्स पे क्योंकि चार्ज है तो आउटसाइड इज़ मोर पॉजिटिव कंपेयर टू इनसाइड, तो उससे इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है. इन शॉर्ट यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है. इस ग्रेडियंट की वजह से प्रोटॉन्स tend to move across this ATP synthase, and in the process protons lose energy, और इस एनर्जी से ये ATP synthase एंजाइम ADP के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करता है and we get ATP, and this entire process is called photophosphorylation. और यहाँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर से निकला था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए एनर्जी लूज़ करते हुए वापस इसी रिएक्शन सेंटर में आएगा, and in the process will synthesize ATPs. तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, और प्लांट्स में हम देखते हैं बोथ
साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो हम स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स में. नाउ एज आई सेड, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक है. यहाँ आयरन सल्फाइड center से electron comes out of this cyclic flow and is accepted by this ferredoxin, और ferredoxin से लेता है इस इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम NAD प्लस और NADP प्लस. ये NAD प्लस और NADP प्लस प्रोटॉन भी लेता है और बनता है रिड्यूसिंग पावर NADPH और NADH. बट यहाँ तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूटता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हैज सोर्स अदर देन वाटर, एंड विच यू कैन सी हियर इज हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स अस 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्पनसेट करेंगे उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को जो यूज़ हुआ था NADH हमारा रिड्यूसिंग पावर बनाने में. एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सल्फर गैस इज रिलीज्ड. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन खाली ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की है. पर्पल बैक्टीरिया में डिफरेंट रिएक्शन सेंटर होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और वहाँ पे बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एंड वी डोंट हैव टू गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स. So this was all about light reaction part of bacterial photosynthesis, where we saw synthesis of ATPs and NADPH. Dark reaction in bacteria is same as plants, and we will discuss that in chapter photosynthesis in green plants. And now let's talk of another mode of autotrophic nutrition in bacteria called chemosynthesis. So chemosynthesis may be bacteria synthesizes organic materials from inorganic raw materials with the help of energy obtained from exogonic chemical reactions involving oxidation of inorganic substances. Example के लिए जैसे nitrosomonas and nitrosococcus, they obtain energy by oxidizing ammonium to nitrite. अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, और नाइट्राइट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. So the oxidation state of nitrogen has gone from -3 in ammonium to +3 in nitrite, and we know increase in oxidation number means oxidation, and I hope that you know decrease in oxidation number is reduction. And here you see energy is being liberated, which means this is an exogonic chemical reaction involving oxidation, and this energy is utilized by nitrosomonas and nitrosococcus for chemosynthesis. Another example of chemosynthesis in bacteria is of nitrocystis and nitrobacter. Here again, nitrite is oxidized to nitrate, which liberates energy. Oxidation number of nitrogen in nitrite is +3, and oxidation number of nitrogen in nitrate is +5. Here also we see an increase in oxidation number, and increase in oxidation number means oxidation. इसी तरह we have sulfur oxidizing bacteria like Beggiatoa. It oxidizes hydrogen sulfide to sulfur in order to obtain energy for chemosynthesis. यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2S इज -2, और यहाँ
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम -2 to 0, मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है. So this was all about autotrophic nutrition in bacteria. Now let's talk of heterotrophic nutrition in bacteria. So heterotrophic nutrition involves obtaining of a ready-made organic nutrients from outside sources. In bacteria, this heterotrophic nutrition is of further three types: saprophytic, symbiotic, and parasitic. In saprophytic nutrition, बैक्टीरिया सीक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द आउटसाइड organic remains like animal corpses, fallen leaves, fruits, etc. और डाइजेस्ट करते हैं इन ऑर्गेनिक रिमेन्स को आउटसाइड देयर बॉडी. डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब करते हैं इनको इन सॉल्युबल सिंपलर कंपाउंड्स की फॉर्म में. एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंटेशन कहते हैं. एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स को putrefaction. These saprophytic bacteria, along with fungi, are the decomposers of organic remains. Saprophytic bacteria take part in disposal of dead bodies, organic wastes, and in the process they release raw materials for reutilization. Okay. Next was symbiotic nutrition. So these symbiotic bacteria live in mutually beneficial association with other organisms. Say for example, in human intestine, we find E. coli or Escherichia coli bacteria. It shares our food but checks the growth of other harmful bacteria. It produces several B vitamins as well as vitamin K. और symbiotic nutrition के बाद we come to parasitic nutrition. Okay, so these parasitic bacteria, they live in contact with other living organisms for nourishment or for growth factors. These growth factors are special organic compounds required for growth. इन parasitic bacteria के पास ढेर सारी modifications होती हैं to overcome various defense systems of the host. Say for example, जिन बैक्टीरिया का होस्ट कोई एनिमल होगा उनमें एग्रेसन्स होंगे फॉर ब्रेकिंग डाउन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल. उनमें ल्यूकोसिडेंस होंगे फॉर किलिंग होस्ट्स फेगोसाइट्स. उनमें स्ट्रेप्टोकाइनेजेस होंगे फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग. और जिन पैरासिटिक बैक्टीरिया का होस्ट प्लांट होगा उनमें आप पाओगे सेल्यूलेज एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग सेल वॉल. और भी ढेर सारी मॉडिफिकेशंस होंगे. ओके, तो पैरासिटिक बैक्टीरिया may or may not cause disease in the host. Disease causing forms are called pathogenic bacteria. Now let's take a few MCQs related to what we have discussed in this chapter of biological classification so far. You can write your answers down in comment section. Question 1. Oxygen is not produced during photosynthesis by Cycus, nostoc, green sulfur bacteria, or Nowshera. Question 2. F factor is located in cell wall, cosmid, plasmid, or prochromosome. Question 3. Bacterial cell membrane is infolded to form episome, mesosome, acrosome, or spherosome. Question 4. The structures that help some bacteria to attach to rocks and or host tissues are holdfast, rhizoids, fimbriae, mesosomes. Question 5. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on presence or absence of well-defined nucleus, or you say complexity of cell,
Option B, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of body organization. Question 6. The motile bacteria are able to move by fimbriae, flagella, cilia, pili. Question 7. Membrane bound organelles are absent in Plasmodium, Saccharomyces, Streptococcus, Chlamydomonas.